Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 3, that is simple equation. Now class, let's start the chapter. Introduction. In class 6 we have learned that an equation is a condition on a variable or literal number or letters or symbol used to represent numbers. They do not have a fixed value. For example, x, y, z, a, b, c, m, etc. are variables. On the other hand, a symbol having a fixed value is a constant. For example, 3 minus 1 root 5. An algebraic equation is a statement that expresses the equality of two algebraic expressions. Consider the equation 2x plus 5 is equal to 9. Now class LHS is equal to, ये क्या क्लास LHS और ये क्या हुआ हमारा RHS. Now class linear equations क्या होती है हमारी ये? In an equation of one variable, the highest power or degree of the variable is 1. The equation is called a linear equation. In one variable, all linear equations can be written in the simplest form: x plus b is equal to c, where a, b and c are constant and a is not equal to 0, b and c can be 0. Now class, for example, x upon 3 minus 7 is equal to 1. Here a क्या होगा class? 1 upon 3, and which is coefficient of x, b is equal to minus 7 and c is equal to 1. For example, a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 15. In the above equations, the highest power of the variable is 1. So these are the linear equations in one variable. Writing statement of an equation. Now class, as we simplify a given mathematical statement to a simple equation, we can also write a statement form of a given equation. However, more than one statement can be formed for a given equation. For example, the equation is x minus 7 is equal to 11. The statement form can be any one of the following. When 7 is subtracted from x, you get 11. The number x is 7 more than 11. The difference between x and 7 is 11, and so on. Come on. Exercise 3.1, question number 1. Classify the following as linear equations or non-linear equations. Understand? Let's class see the A part. Plus 9 minus 5x square minus 4. Class ये हमारी क्या है? Non-linear equation. Now class, ये हमारी linear equation. Now class, rest of the parts do yourself. Come on, question number 2. Write the following equation is in statement form. Now class, the number x plus 5 is give 11. The sum of, class आप लिख सकते हैं, the sum of numbers x and 5 gives 11. Now class, see the B part. Class यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 subtracted from twice of x gives, क्या दे रहा है क्लास में? 13. 5 subtracted from twice of x gives 13. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 3. Express each of the given statement as an equation. Now class, 5 times of a number when added to 10 gives 50. 5 times number हम let कर लेते हैं x. 5 times of a number when added 10 gives 50. Understand class? Now if 1 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 1 by 2. Class difference क्या करना है? Multiply 1 by 2. नंबर हमने क्या है? Let x और हमने separate किया है 1. तो रिजल्ट क्या है क्लास हमारा? 7. Understand class? Rest of the parts do yourself. Methods of finding the solution of a linear equation. A solution of a linear equation is a numerical value that by the equation. There are 3 methods of finding the solution of a linear equation. Trial and error method. In this method, different values of a variable are substituted in the equation. The process is continued until a value is found which makes both the sides of the equation equal.
The number which makes LHS and RHS equal is called the solution. Now example, solve the equation. Class हम इसको solve करेंगे अगर हमारा yes class we have LHS, अभी क्या है हमारा RHS. Now let us use different values of x to solve the equation. Now class, here is 17, here is 9. No, no. यहाँ पर हमने 1 किया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3. Now class again no. यहाँ पर हमने 3 किया तो क्लास तब हमारी क्या हो गई, LHS is equal to RHS. Yes. At x is equal to 3, LHS is equal to RHS, hence s is equal to 3 is the solution of the given equation. Now class, systematic method, trial and error method is not a direct and practical way to finding a solution to an equation. क्लास ये हमने ऐसे ही, ये जो मेथड है ना तो ये क्लास प्रैक्टिकल मेथड है, प्रैक्टिकल वे नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम इसको, इज नॉट अ डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल वे टू फाइंडिंग for finding a solution of an equation. Then in systematic method same operation are formed on both the sides of an equation and the terms are eliminated one by one until the solution of the equation is found. Doing so doesn't affect the equation. Now class, do you know opposite operation of plus is minus and minus is plus? Similarly, the opposite operation of multiplication is division and division का क्या होगा, multiplication. When the variable is on only one side of the equation, to solve this type of linear equation, follow these given steps. Now simplify the equation by combining the like terms of each side. Now think what should be removed to get the value of the variable. Now remove it by performing opposite operation. Perform the operation on both sides. Come on, solve examples. Solve the following linear equations. Class, find the sum. Now class, ये क्या है क्लास, कंबाइन लाइक टर्म्स. हमने क्या किया, उसमें कंबाइन कर दिया उसको लाइक टर्म्स में. 2x 6x minus 4x 2x plus 7x is equal to 19. नाउ क्लास, अब हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे. 19 subtract 7 from both sides of the equation to remove 7 from LHS. नाउ क्लास हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड, तो क्लास क्या होगा, x की वैल्यू 6. डिवाइड by 2 on the both sides of the equations to remove 2 from LHS. When the variable is both sides of the equations, to solve this type of linear equation, follow the given steps. Simplify the equations by combining like terms of each side. If the linear equation has a constant, remove it by performing the opposite operation on both sides. Remove the variables from any one side by performing the opposite operation on both sides. Class, जो भी करेंगे हम दोनों ही साइड में करेंगे. Solve the examples. Example number 1, find the solution of the linear equation 8x is equal to 5x. Now class, यहाँ पर 8x minus 5x 5x minus 5x, दोनों साइड मैंने क्या किया, 5x को माइनस कर दिया. Now class, subtract 5x from both sides to remove 5x from RHS. So class, it is 3x is equal to 0. Now x is equal to 0. So the solution of the given linear equation is x is equal to 0. Now 1 upon 0 upon k is equal to 0, where k is any possible number other than 0. Find the solution of the linear equation 6a minus 2x plus 7x is equal to 20. Now class, हमने उसको like term में किया पहले तो, that is 4x minus 7. अब हमें क्या करना होगा, 7 इधर चले जाएगा, that is plus. Now class, ये क्या हो जाएगा, 3x x equal to 9. So the solution of the given linear equation is x is equal to 9. Now transposition method. Transposition means moving from one side to other side. एक साइड से दूसरी साइड को कर देंगे हम क्लास. When a term is transferred from one side the equation to the other side, its sign gets changed. क्लास, अगर मैं जब भी मैं अगर यहाँ पर इक्वल टू के कोई डिजिट यहाँ से यहाँ लेके आऊंगी तो क्लास साइन चेंज होगा. अगर वो प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी. This means that any term can be moved from one side of the equation to the other simple by changing its size from plus to minus or minus to plus, or from multiplication to division or division to multiplication. Yes class, solve the equation 3x plus 10 is equal to 25. क्लास, यहाँ पर ये क्या है, 10 है, प्लस का यहाँ पर क्या होकर क्या हो जाएगा, माइनस. So x is equal to 5. Now example number 2, solve the equation. Again ये इधर चला जाएगा और ये इधर हो जाएगा. So class, transposing plus 4t is equal to plus 4t to RHS as minus 4t minus 1 to LHS as plus 1. Class, you can see here t is equal to minus 1, hence the solution of given linear equation is t is equal to minus 2. Come on, exercise 3.2, question number 1, verify the following. X is equal to 3 is the solution of
x 6 अपॉन x इज इक्वल टू 2 क्लास 6 अपॉन x की जगह रखूंगी 3 इज इक्वल टू 2. नाउ 3 2 are 6, 2 is equal to 2 plus, yes, verified. Now rest of the questions do yourself. Come on, question number 2, solve the following equation by trial and error method. Class trial method में क्या था हमारा? Yes class, हमने क्या किया था? हमने x की वैल्यूज चेंज की थी. Now यहाँ पर क्लास 7y upon minus 2 is equal to 5. Yes class, question number 2, solve the following equation by trial and error method. Class, you can see here 7y अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. नाउ क्लास हम तब तक हमारा LHS इज इक्वल टू RHS ना आ जाए. ओके क्लास, तो क्लास 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. नाउ 7 माइनस 2 5. नाउ 7 माइनस 2 5. क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा 5. क्लास ये भी नहीं होगा. तो क्लास अब हम क्या रख के देखते हैं? y इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं. 7 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 minus 2 is equal to 5. Now 14 minus 2 upon 5 is equal to 5. Again class नहीं होगा. Now y is equal to 3 रखेंगे क्लास हम. Now 21 minus 2, 21 minus 2 19 नहीं होगा. Now 7 y की जगह 4 रख के देखते हैं upon 5 minus 2 is equal to 5. Now 7 4s are 28 minus 2 26. नाउ क्लास अगेन नहीं होगा. क्या हमने 7 4 28 माइनस 2 26 अपॉन 5 नहीं होगा. नाउ क्लास अब हम 7 y की जगह 4 रख के देखते हैं क्लास. 7 4 are नाउ माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5. 7 4 are 28 माइनस, यस क्लास अब हम 7 की जगह अपने y की जगह 5 रख के देखते हैं. 7 5 are 35 माइनस 2 33 नहीं होगा क्लास. अब 7 की जगह हम 6 रख के देखते हैं. y की जगह 6 माइनस 2 अपॉन 5 is equal to 5. Yes class, 7 4 7 6 are 42 minus 2. Yes class, अब हो जाएगा 7 to 6 are 42 minus 2 upon 5 is equal to 5. 40 2 minus 2 40 upon 5 is equal to 5. 5 8s are 40. Now class अभी भी नहीं होगा. 8 is equal to 5. Now अब हम 7 y की जगह 7 रखते देखते हैं. 7 7s are 49 upon, now class 5 7 7s are 49 minus 2 upon 5. now class क्या हो जाएगा यहाँ पर 48. now 48 minus 2, कट क्लास. यहाँ पर क्लास सी हमें क्या बनाना है? अपना LHS इज इक्वल टू RHS बनाना है. Now class question is 7y upon 5 is minus 2 is equal to 5. क्लास हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे. Now class हम पहले 5 रख के देखते हैं. Now class 5 minus 2 is equal to 5. 7 5s are 35 minus 2 is equal to 5. Now class upon 5. 35 minus 2 33 upon 5 is equal to 5. Now class 3 is equal to 5 5s are 25. Now class ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे. Understand class? Okay. Now class see the next question. 8x is equal to 32. गड़बड़ी कट. Question number 2 class 7y minus 5 minus 2 is equal to 5. यहाँ पर क्लास हमें LHS is equal to RHS बनाना है. That is 7 मल्टीप्लाई बाय हम 5 रख के देखते हैं क्लास. माइनस 2 is equal to 5. Now class 35 upon 5 minus 2 is equal to 5. Now we will take the LCM. Now class 35 minus 5 2s are 10 is equal to 5.
Now class 25 upon 5 is equal to 5. So 5 5s are 25. Now class 5 is equal to 5. LHS is equal to RHS. Understand class? Now let's see the B part, that is 8x is equal to 32. Now class अब हम x की जगह क्या रखेंगे 4. We know that 8 fours are 32. 32 is equal to 32. Class again LHS is equal to RHS. Understand class? ये हमारी थी क्लास ट्रायल एंड एरर मेथड. Now rest of the yes class A and B part is done. Rest of the parts do yourself. Come on question number 3. Solve the following equation by the systematic method and check the result. Now class question number 3, minus 3 minus 3y minus 8 is equal to 4. Now minus 3y is equal to 4. अभी क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो क्लास माइनस 3y इक्वल टू 12 plus y is equal to 12 minus 3, so y is equal to 4 minus, because 3 4s are 12. Now see the B part, minus y minus 8 is equal to 4, minus y is equal to 4 plus 8 minus y is equal to 12, so y is equal to minus 12. Understand class? Yes class. And B part is rest of the parts. Do yourself class. Now question number yes class, rest of the parts do yourself. Come on question number 4. Solve the following equation by the transposition method and check the result. Now class minus x upon 7 plus 3 is equal to 6. Now class minus x upon 7 यहाँ पर 3 वहां पर जाके हो जाएगा माइनस का minus x is equal to 3. Now class minus x is equal to multiply हो जाएगा 7 multiply by 3, so x is equal to minus 20. Understand class? Now the B part, minus y minus 8 is equal to 4. Now class minus y is equal to 4 plus 8, so y is equal to minus 12. Understand class? I hope these questions are clear to you. Now rest of the parts do yourself. Come on question number 5 class, match the equation given in column first and with the solution given in column second. Class x minus 3 is equal to 5 plus ये इधर होके क्या हो जाएगा प्लस का, so 5 plus 3 8, so x is equal to 8. Now class 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x plus 3 3s are 9, so class x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर minus 3. Now यहाँ पर ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, so x is equal to 1. Now यहाँ पर क्या है क्लास ये प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा x is equal to minus 5. क्लास x is equal to यहाँ पर ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, x is equal to 5. Now क्लास यहाँ पर x upon 7, यहाँ पर ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्लास x is equal to minus 21. Now this is now class rest of the questions do yourself. Yes class, now application of equations in practical situations. Application of equation in practical situation. In this section we shall discuss formulation and solution of many problems. Plus formulation and uske solution of many problems and puzzles in everyday life. Such problems are called word problems. Class हम उन्हें क्या कहते हैं word problems. The situation of word problem is written in the form of a linear equation and then solved. हम उसको linear equation में लिखते हैं, उसको हम फिर solve करते हैं. It is done in the following steps. Obtain the given word problem, study the problem carefully and identify what is given and what is required. Class क्या दिया हुआ और क्या हमें required है, क्या हमें find out करना है. Denote the unknown quantities by variable x y z. Class उसको denote कर देते हैं unknown quantities को x y z से. Okay, convert word statement into mathematical statement. For example, twice of a number is written as 2x. According to the condition given problem for the equation, solve the equation obtained in steps. Solve example number 1. Sum of three consecutive integers is 24. Find the
इंटीजर क्लास हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मान लिया, x प्लस 1 x प्लस 2, और हमने उसको फाइंड आउट कर दिया, दैट इज x की वैल्यू क्या हो गई 7. नाउ अब क्लास 7 7 प्लस 1 8 और 2 9, 7 8 9 हमारे क्या हो गए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए. एग्जांपल नंबर 2, प्रेजेंट एज ऑफ सोनूज मदर इज 6 टाइम्स सोनूज एज. सोनू की जो मदर है 6 टाइम है सोनू की एज से. 5 इयर्स हैंस 5 साल बाद हर एज विल 20 इयर्स. ठीक, एज क्या हो गई क्लास, हर एज हो गई 20 साल एंड दैट ऑफ द सोनूज एज फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. अब क्लास उनकी जो प्रेजेंट एज है हमें वो बतानी है. लेट द एजेस ऑफ सोनू एंड मदर बी x एंड 6x, क्योंकि 6x यानी कि उसकी 6 टाइम थी. नाउ आफ्टर 5 साल तो क्या होगा x प्लस 5 और 6x प्लस 5. नाउ इट इज गिवन टू क्लास अबाउट 5 इयर्स मदर एज विल बी 20 इयर्स. जो मदर की एज है वो 20 साल हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो क्लास हम किस में ऐड करेंगे, उसके बेटे में, क्योंकि उन दोनों को हमें इक्वल बनाना है. देन हम उसको फाउंड आउट करेंगे. x की वैल्यू क्या होगी 24, सोनू की एज क्या है 4 और उसकी मम्मा की एज क्या है 24. नाउ एग्जांपल नंबर 3, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस 5 लेस देन द डिनोमिनेटर. if 3 is added to the numerator and fraction is equal to 2.2 upon 3, find the fraction. let the denominator be x. अब क्लास उससे 5 कम है, फ्रैक्शन क्या होगा ये, और उसको हम इक्वल में रख देंगे 2.2 अपॉन 3 के. देन हम उसको सोल्व आउट करेंगे, दैट इज क्लास, so fraction is 1 upon 6. Come on exercise 3.3 question number 1. Yes class, see question number 2. क्या किया था उसने, 2/5 जर्नी अपनी, जर्नी किससे 2/5 अपनी ट्रेन से, 1/3 किससे बस से, 1/4 कार से एंड देन रेस्ट ऑफ द जर्नी उसने बाय फुट ट्रेवल की थी. नाउ क्लास टोटल जर्नी, नाउ लेट टोटल जर्नी प्लस क्या होगी इज इक्वल टू x किलोमीटर. नाउ क्लास अब उसने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2/5 की उसने किससे, बाय ट्रेन, 1/3 बाय बस एंड 1/4 बाय कार एंड रिमेनिंग जो बची हुई 3 किलोमीटर थी उसने की बाय फुट. नाउ क्लास अब हमें टोटल जर्नी को उसको फाइंड करना है. अब x इज इक्वल टू, नाउ क्लास ये क्या होगा, अब हम इनका सबका एलसीएम लेंगे, दैट इज 60. यहाँ पर 24x प्लस 20x प्लस 15x. ओके क्लास, नाउ हियर इज 180. ओके क्लास, नाउ x इज इक्वल टू, अब इन सबका टोटल होगा क्लास 59x अपॉन 60 प्लस 180. अब क्लास इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 59x प्लस 180. नाउ 60x माइनस 59x इज इक्वल टू 180. नाउ क्लास x इज इक्वल टू 180 किलोमीटर जर्नी. उसने 180 किलोमीटर जर्नी को उसने टोटल जर्नी की है, उसने 180 किलोमीटर. अंडरस्टैंड क्लास. अब उसने यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, उसकी टोटल जर्नी बताई है यहाँ पर. अंडरस्टैंड क्लास. सो फाइंड द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, दैट so 180 kilometer is the length of his total journey. Understand class? Now class, rest of the questions do yourself. And now your chapter is completed. Prepare it very well and we will meet you in next class. Thank you.